Yeah, good morning, everybody, and welcome to the session. Apologies, just 1 minute late today. Guest was waiting for the my other screen where I can watch the questions. So yeah, good morning, everybody. Great to see you all the regular traders out there. So yesterday we really had a bloodbath, and कुछ surprise नहीं था कि it was showing. Yeah, such a strong one. Even was a surprise in the sense then the US, the Trump, the global markets falling, the Dow futures crashing. One second, something is wrong with my other monitor. I'm not getting signals. I don't know why. So just give me a minute here. Yeah, I guess it's just going on and off, on and off. I don't know why. Just give me a minute. Something. I'm just getting no signal in my other monitor. I'll try last time, or else for your questions, I will just refer to the mobile. I guess now it's working properly. Yeah. So I'll just share my screen. Once again, good morning, Sabko. Yeah, my screen is shared, and first thing I have to read out the disclaimer. This is for educational and informational purposes only and does not constitute financial advice. Whatever we are doing here is for educational purposes only. Now let's go to the markets. What happened yesterday as a trader? Let's forget and start fresh. What is the first global headlines? US strikes Iran again after Trump's earlier warning as tension escalates. फिर से ईरान आ गया तो क्रूड ऊपर जाएगा तो मार्केट में प्रेशर है अगेन दैट साइकिल हैज कम बैक प्लीज रिमेंबर दैट ओके बट मार्केट्स डू गिव स्पाइक्स डू गिव पुलबैक्स तो आपको जो वॉलेटिलिटी अभी मिलेगी वो बहुत स्ट्रांग वॉलेटिलिटी मिलेगी सो आफ्टर दैट लेट्स सी ग्लोबल मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट है अभी कल तो सब मार्केट एक साथ ही मतलब 15 मिनट में एवरीथिंग वेंट डाउन सो दिस इज आई वांट फ्यूचर्स सो लेट मी ब्रिंग इन द फ्यूचर्स प्राइस या अभी यूएस फ्यूचर्स देखिए तो फ्लैट है कल का जो बिकवाली था उसका आज फ्लैटिश है अभी मॉर्निंग में एटलीस्ट इसके अलावा यूरोप पूरा नेगेटिव है फ्यूचर्स बोवेस्पा ब्राजील मेटल इंडेक्स नेगेटिव है निकाई फ्लैट है तो एक चीज जानने पता चल रहा कि ग्लोबल मार्केट्स में फॉलो अप नहीं आया सो दैट टेल्स अस दैट लेट्स नाउ गो एंड लुक अ मार्केट फ्रेश ये मैं कोप्सी देख रहा था सो इफ यू सी कोप्सी दिस इज द फ्यूचर्स सो सब कुछ मोर और लेस देखिए लास्ट लो के आसपास सारे इंडाइसेस आ रहे हैं जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट ओके सो नाउ विल स्टार्ट विद फर्स्ट आज क्रूड देखते हैं एंड क्रूड फ्रेंड्स अगर ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर अगर हम देखें तो क्रूड ये सपोर्ट पे तो आ गया था एंड दिस इज व्हाट वी वर रिलाइंग अपॉन इट द रैली स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड वापस इट केम बैक टू हियर सो नाउ क्रूड का जो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट इज $79 एंड देखिए ये लेवल ब्रेक करना क्रूड के लिए टफ है रिमेंबर जब भी क्रूड 66 और 68 के बीच में आता है ना आप एक चीज ध्यान में रखो कि यहाँ से क्रूड में एक बाउंस पुल बैक आएगा बिकॉज इसको हम बोलते हैं प्राइस एक्सट्रीम जहां से मूव ओरिजिनेट हुआ था वापस भाव जब वहां पे आता है ना तो ऑलवेज हाई प्रोबेबिलिटी रहती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट टेक्स सपोर्ट्स ओवर दैट सो जस्ट कीप इन माइंड क्रूड ओवर हियर ये चार्ट्स का आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो जब भी क्रूड यहाँ पे आता है इट्स अ ट्रबल फॉर द मार्केट्स रिमेंबर दैट और ऊपर में $79 और भी $3-4 की तेजी बाकी है क्रूड में बट क्रूड मुझे नहीं लग रहा ये लेवल तोड़ेगा नीचे में सो ये एक स्पॉइलर रहेगा क्रूड जब भी लोअर लेवल्स पे आ रहा है आफ्टर दिस वी गो एंड चेक इंडिया विक्स
दो चीज हम रोज चेक करते हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ डिड यू सी द विक्स ओवर देयर? विक्स में हम क्या देख रहे थे कि ये जो लो है, जैसे क्रूड यहाँ से चला था वापस आ गया, सेम लेवल विक्स का था। देखिए कोई भी चीज जब सपोर्ट पे आती है तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है वो ऊपर जाएगी। नाउ इंटर मार्केट रिलेशनशिप सबको पता है, अगर विक्स ऊपर जा रहा है तो निफ्टी नीचे जाएगी। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है विक्स का ये 10 का रेंज तोड़ना नीचे में टफ है। अभी हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सी इफ वी आर गेटिंग एनी पैटर्न्स ऑन विक्स। लेट अस सी। ये हाई ज्वाइन, लोज ज्वाइन कर दिए, हाईज ज्वाइन कर दिए, तो विक्स में क्लियर चैनल है। एवरीबडी गॉट दिस चैनल ऑन विक्स? If we get two highs and two lows joining, a channel is getting constructed. Keep on giving me yes. So VIX मुझे ऐसा लग रहा है आज 15 की तरफ जाएगा। आफ्टर दैट देखना है क्या विक्स में ये ब्रेकआउट आ रहा है। अगर आ रहा है तो दैट्स बैड फॉर द मार्केट्स, रिमेंबर दैट। प्रीवियसली भी अगर आप देखो, जब भी कोई चीज फॉलिंग चैनल में रहती है ना, तो हमें एक बार तो कॉशियस हो ही जाना। अगर फॉलिंग चैनल से कोई भी चीज ऊपर ब्रेक करती है तो वो ऊपर जाता है। अगर विक्स विल गो अप देन निफ्टी विल, इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन निफ्टी। तो हम ये चैनल को आज से विक्स में फॉलो करेंगे। अगर ये चैनल पे यहाँ ऊपर में विक्स रुक जाता तो एक राहत मिलेगी हमें कि मार्केट एक आध दिन साइडवेज चला जाए। सो एवरीबॉडी टेक अ स्क्रीनशॉट, व्हाटएवर यू वांट, नोट डाउन द लेवल्स, और विक्स में ये चैनल मार्क करके रखो। एवरीबॉडी क्लियर? And those participants who are joining for the first time, VIX and Nifty are inversely related. अगर हम कल 15 मिनट पे देखते हैं तो विक्स में ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ गया था, विक्स ने आई थिंक पहले इंडिकेशन दे दिया था, नहीं सब कुछ साथ में बढ़ा। द मोमेंट विक्स ब्रोक ऑन द अपसाइड, देखिए मैं तो विक्स को एज ए इंडिकेटर यूज करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज रखता हूँ चार्ट में। मेरे स्क्रीन पे विक्स ऑलवेज रहता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे विक्स ने ये ब्रेकआउट दिया था तो इट वाज वेरी वेरी क्लियर, मार्केट स्पाइरल्ड अप। तो नेक्स्ट टाइम ये सब चीज़ का आप ध्यान रखो। Those who participants who are joining up for the first time, if you are a day trader and short term trader, आप विक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। नो पॉइंट इन सेइंग लो वॉलेटिलिटी। अरे लो वॉलेटिलिटी मतलब क्या, अगर ऊपर गया तो मार्केट नीचे जाएगा ना। थोड़ा एकेडमिक इंटरप्रिटेशन से बाहर निकल के कम टू द ट्रेडिंग इंटरप्रिटेशन पार्ट ऑफ इट। ये ब्रेकआउट वेरी वेरी क्लियर था। सो अतुल, आर यू नाउ यूजिंग विक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? विक्स को एज अ इंडिकेटर रखना स्टार्ट कर दो। जैसे आपको सुनाई दे ईरान एंड ट्रम्प एंड दिस एंड दैट मीन्स वॉलेटिलिटी इज कमिंग बैक। इफ वॉलेटिलिटी इज कमिंग बैक, which indicator is going to pick up that volatility for you on a day to day basis? That is only India VIX, which is the volatility index. So keep this as an indicator on the left hand side of your price charts. अतुल, इसको हमेशा रखो, IB मैथमेटिक्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इतना करने के बाद लेट्स गो एंड चेक गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखो तो कल के जो गिरावट था उसके बाद इसको एक एग्जॉशन बोलते, कल काफी गिर गया था, तो आज थोड़ा ऊपर है, करीब 100 पॉइंट। दैट्स इट, नथिंग मोर आई एम रीडिंग इनटू दिस। इतना देखने के बाद अभी मन में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा पुल बैक आ जाएगा, या लेट्स आज दिमाग एकदम ब्लैंक रख के आज मार्केट में जा रहे हैं लेवल्स के साथ, और बैक ऑफ द माइंड रखते हैं वॉलेटिलिटी हो सकती है। एंड कोई भी प्री डिसाइडेड ट्रेड मत कर लो कि आज मुझे बेचना ही है, आज मुझे लेना है। डोंट डू दैट, बी वेरी न्यूट्रल, टेल योरसेल्फ आज मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। वंस यू से दैट, द प्रेशर ऑफ ट्रेड इज ओवर ना, फिर खुलने दो मार्केट को। लेट्स सी हाउ द प्राइस स्टैम्प्स आर देयर ऑन द प्राइस चार्ट्स, एंड एज डे प्रोग्रेसेस you will get it very clear with your plan. After this I am going to nifty. Now nifty में सबसे पहले आप डाल लो 200 डे मूविंग एवरेज। दिस इज नाउ द वेरी डोमिनेंट स्टडी which will have to follow. So अगर मैं, या इट्स इज गोइंग टू बी सिंपल, मैं सिंपल यूज करता हूँ। Somebody asked me logic क्या है, even I don't know, I try to keep things simple, so that's why I'm using simple moving average. So ये 200 दिन का एवरेज है। What happened? Have I made some mistake? नहीं, I have
put 200 DMA. Sorry, that was Bank Nifty. I think 50 रहेगा ये. I'm sorry. So this is 50-day moving average for Nifty. देखिए आज 50 डे में यहाँ पे सबसे पहले प्राइस एक्शन समझो, इंडिकेटर्स मत डालो सबसे पहले. देखिए ये लोअर और यहाँ पे 50 है, तो ये लाइन आप ड्रॉप कर दो यहाँ पे, एंड देन यू हैव दिस गैप ओवर हियर, राइट. तो ये दो लेवल्स मुझे नीचे में मिल रहे. मार्केट में पॉसिबिलिटी है 23,651 की. द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस लो ना, लो टूटते ही 50 दिन का एवरेज टूट रहा है. एंड 50-डे मूविंग एवरेज इज व्हाट वी कॉल अ मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन, और जो लो है वो है 23784. तो ये दो लाइन आज इंट्राडे चार्ट्स पे आपकी रहनी चाहिए. नाउ आई विल रिमूव द पर्पस ऑफ एवरेजेस ओवर. आई विल कम डाउन टू 60 मिनट्स. Now can you see these are the two gaps over here, and रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्केट को देखिए. प्रीवियस डे का जो फॉल है, रेजिस्टेंस काफी ऊपर, विच इज वे अप हियर ऑन अ दिस थिंग 4,300. तो आई डोंट नो वेदर इट विल कम इन टू प्ले टूडे और नॉट. या 200 days for Bank Nifty. So now I go to 15 minute. If I now go to 15 minutes, these levels are intact. पर ये लेवल टूटा तो एक डिप है till here. After that, let's see whether market continues its decline or not. Okay. So this is how today's price action is placed at. और कल जो मार्केट यहाँ से गिरा, बीच में एक पॉज था, ये कनेक्टिंग कैंडल बोलते हैं इसको, which means आपको ये टाइम फ्रेम पे नहीं दिखेगी. अगर 5 मिनट पे जाओ तो probably you might spot it, but we stay at 15. तो drop one line over here also. Market gira. Again it fell down. So over here everybody surrendered. 24,200. So this is how the levels for the day are. So we have done a detailing, try to find out the imbalance of buyers and sellers, and post that we are coming to this conclusion. Right. So everybody clear when we move next to Bank Nifty? Yeah, good morning Venkat. Okay, so keep this in mind. ये क्रॉस करना मुझे टफ लग रहा है 24,000. अगर 23,790 ब्रेक किया तो एक डिप है, वॉलेटिलिटी रहेगी. सो फॉर दैट प्लीज यूज द व्हाट वी कॉल द MMA study which is there on the YouTube video section, which is called multiple moving average or a momentum trading system. Evening I will show you that system today. Okay, now I'll go to Bank Nifty. देखिए बैंक निफ्टी में नो ब्रेनर है, आपको सिर्फ 200 DA में ग्राफ के इंट्राडे डाल देनी. वंस प्राइसेस ब्रेक्स इंपॉर्टेंट एवरेजेस, दोस एवरेजेस इटसेल्फ बिकम्स द रेजिस्टेंस. सो दिस इज द 200 DA में, एंड कल जैसे 200 DA में और लो टूटा, देयर वाज अ बिग क्रैक. ड्रॉप अ लाइन एट 200 डे मूविंग एवरेज ऑन योर इंट्राडे टाइम फ्रेम चार्ट्स. नाउ द पर्पस इज ओवर, रिमूव इट. नाउ दिस इज 60 मिनट्स. तो ये 200 DA में आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा. यहाँ पे हो सकता है कॉइलिंग प्राइस एक्शन हो जाए, एंड ऑन द डाउन साइड बेस्ड ऑन द करंट प्राइस जो है, सपोर्ट इज वे डाउन हियर विच इज 55,750, काफी नीचे. उसके बीच में सपोर्ट गेट एस्टैब्लिश, यू हैव टू पिक इट अप विथ योर रूल्स और विथ योर स्टडीज. सो या बीच में आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग. इट्स वॉज अ वन वे रैली. सपोर्ट कब बोल सकते हैं? अगर पॉज है तो देखते क्या ये गैप भर गया मार्केट का. लेट अस कम बैक टू द करंट प्राइस. यस, दिस गैप इज ओवर. सो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है. वो जो आप डिप्स देखते हो ना, वो प्रीवियस डे लो टूटने के बाद आती है. सो प्रीवियस डे लो पे जस्ट ड्रॉप अ लाइन. सी टुडे इट्स ऑल अबाउट लाइंस. देखिए वॉल स्ट्रीट में कहावत है, अ किड विद अ रूलर कैन मेक अ मिलियन. समटाइम्स based on volatility and levels, you need to keep things very, very simple. So there's always a concept of what we call KISS, KISS, which says keep it simple, silly. So today is one such day.
ज़्यादा कुछ डालो मत, प्राइस एक्शन में वॉलेटिलिटी खोजो, द लेवल्स आर नोन एंड दिस इज योर 200 DMA. मेक श्योर 200 DMA इज देयर ऑन योर प्राइस चार्ट. 200 DMA आपको रखना बैंक निफ्टी पे, इंट्राडे पे वो लाइन ड्रॉप कर दो, निफ्टी पे आपको रखना 50-day मूविंग एवरेज. क्लियर? द मोमेंट दिस लो ब्रेक्स आपको एक डिप देखने मिलेगा. सो market might open flattish, but after that let's see whether it's touching the 200 DMA. To me it looks tough, but markets are markets, कुछ भी हो सकता है. And the moment it breaks this, then वो continuation आपका चालू रहेगा. Right? So that's how markets are looking. थोड़ा आज रिलैक्स करो. देखिए बहुत बार ऐसा क्या होता है, जैसे अगले दिन इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट गिरता है तो सबको क्या लगता है कि आज खुलते ही बेचो तो फ्री का पैसा. ऐसा मत करो. जो 50 पॉइंट मिलेगा, डोंट डू दैट. द फर्स्ट थिंग इन सच मार्केट इज फर्स्ट 15 मिनट्स डोंट ट्रेड. आई रिपीट, फर्स्ट 15 मिनट्स डोंट ट्रेड. सी वेदर मार्केट इज positioning itself to break the low or to pull back to the 200 DMA. बीच में आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलेगा. अगर आप एकदम माइंडसेट लेके बैठे हो कि मेरे को पैटर्न मिला, अगर अपॉर्चुनिटी मिला, देन ओनली आई पुट अ ट्रेड, यू विल गेट. बट अगर आप प्री डिटरमाइंड रहेगा, नहीं खुलते ये करना, खुलते ये करना, द मोमेंट इट ओपन्स दिस आई विल डू दिस, देन योर स्टॉप्स विल गेट ट्रिगर्ड. वेरी सिंपल इज दैट. So today market says, dear traders, please sit tight for first 15-20 minutes, observe the price action, and then try to see which side markets are now likely to go. If it is likely to break yesterday's low. Market has given us a clear signal. Yeah, today is a Sensex expiry also. So that is how the setup is on Nifty and Bank Nifty. So I have just an announcement to make. Today we are having talks, or I would say a session with Yogesh Nanda. Yogesh is a qualified chartered accountant and a full-time into options and options trading. So we'll talk about how to plan, what is a credit spread, how as an option trader you should look at chart, what are the risk management you have to do. So make sure you are there today. We'll have a great session with Yogesh. If you want any question to be asked on your behalf, please let me know. So I have just posted the link out there. Please register, and you can forward the link to your friends or trading friends or anybody who's interested to have a very, very good discussion about options trading or trading in general. And today, Devra Sahab is not there. Harpreet, I'm just seeing a message. Harpreet says that US VIX is a lot higher than India VIX, even though the US markets are higher. Is it a cause we have to more sellers in India? See, India, possible, Harpreet, possible, right? So those who have registered, please confirm it to me in the chat. And those who have not registered, please take some time and register. So that's all from my side today, friends. Thanks. Have a nice day. And yesterday we have started this. Please, after the session is over, do drop a comment based on the session, whether you liked it, didn't like it, or how you want to. See, these sessions are for you. Nobody is an expert out there. As I say, we are all part of the Trading Titan community. You want the sessions to be structured in a particular manner, or you want to extend time, reduce time, or coverage. But आपको जो लगता है, open mind से you give a comment the moment I end this session. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day.